अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न ड्रामा। सो लेट्स डिस्कस इट इन द डिटेल। So after the death of Shakespeare and his contemporaries, drama in England suffered for about 2 centuries. Okay, for how much time did drama in England suffered after the death of Shakespeare and his contemporaries? For 200 years almost. So it was revived in the last decade of the 19th century once again, and two factors were responsible for the revival of dramas in the year 1890. ठीक है जी. So the first point is that one was the influence of Ibsen. And who was Ibsen? Ibsen was a Norwegian dramatist, under which English dramatists like George Bernard Shaw claimed the right to discuss serious and social problems in a calm and sensible way. अच्छा जी, पहला जो फैक्टर है वो है एप्सन की वजह से, एंड ही वाज अ ग्रेट नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट. तो उसकी वजह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट था उसको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो सीरियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके एक अच्छे तरीके से, एक राइट मैनर में, इन अ काम एंड सेंसिबल वे. और ये फैक्टर जो है वो किस चीज़ का बायस बना? दिस फैक्टर gave rise to the comedy of ideas, or you can say comedy of purpose. While the second factor which led to the revival of drama is that the cynical atmosphere prevailing at the time which allowed men like Oscar Wilde to treat the moral assumptions of the great Victorian age with frivolity and make polite fun of their conventionality, prudishness. ठीक है जी. एंड दिस फैक्टर लेड टू रिवाइवल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स और द आर्टिफिशियल कॉमेडी. एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो सेकंड फैक्टर था वो क्या था कि एक सिनिकल एटमॉस्फेयर प्रिवेल हो रहा था उस ज़माने में. ठीक है जी. विच अलाउड मैन लाइक ऑस्कर वाइल्ड टू ट्रीट द मॉरल एजम्पशन ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन विद फ्रेविलिटी कहते हैं मज़ाहियापन, एंड मेक पोलाइट फन ऑफ द conventionality and prudishness of the society. And this factor led to the revival of comedy of manners, or you can say it's an artificial comedy. So what's the difference between comedy of ideas or purpose and comedy of manners or artificial comedy? So first let's look at artificial comedy, the comedy of ideas or comedy of purpose. So in it the ideas were represented through particular personalities and characters, and there's usually a clash between differing ideas or point of views. यहाँ कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ और पर्पस में क्या होता है कि आइडियाज़ जो रिप्रेजेंट होते हैं वो थ्रू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ और कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट हुए होते हैं, एंड देयर इज़ यूजुअली अ क्लैश बिटवीन differing ideas or point of views. While the second type of comedy is comedy of manners or artificial comedy. So it deals with elite class, मतलब upper class of the society and their manners और उनके तौर तरीके, and it's satirical in nature. Its main purpose is to bring reforms in the society. One such drama's example is Sheridan's The Rivals. ठीक है जी. Okay, the next point we have is there has been revival of poetic drama in the 20th century. जो 20th century है उसमें किस चीज़ का रिवाइवल भी हुआ था? पोइटिक ड्रामा का. ठीक है जी. विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट who is the most important practitioner of this type of drama? Of which drama? Of poetic drama. It's T.S. Eliot. ठीक है जी. So most of the poetic plays written in modern times have religious theme, and they attempt to preach the doctrines of Christianity. अच्छा, जो ये पोइटिक ड्रामा जो होते थे ना मॉडर्न एरा में जो लिखे जाते थे उसकी रिलीजियस थीम हुआ करती थी, और दे ट्राइड टू प्रीच किस चीज़ की प्रीचिंग करते थे? डॉक्ट्रिन्स मतलब थेरीज की ऑफ क्रिश्चियनिटी की जो तालीमात है उसकी मतलब प्रीचिंग करते थे, क्या कहते हैं उसकी तबलीग करते थे. ठीक है जी. So the two important dramatists who took predominant part of in the revival of drama in the last
decade of the 19th century were two, and they were George Bernard Shaw and Oscar Wilde. So both of these writers were really great, and they were quite opposite to each other. Okay, so the first point is that both were Irishmen. ठीक है जी, ये सिमिलरिटी क्या थी? Both were Irishmen. George Bernard Shaw was the greatest practitioner of the comedy of idea. Wilde was greatest practitioner of new comedy of manners. ठीक है जी, एक जो था शॉ जो था वो कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ का को तरजीह देता था, वाइल्ड ऑस्कर वाइल्ड जो था वो किस चीज़ को तरजीह देता था? कॉमेडी ऑफ मैनर्स को. अच्छा जी. Shaw was a great thinker and represented the Puritan side of Anglo-Irish tradition. जो शाह जो था वो ग्रेट थिंकर था और किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करता था? प्यूरिटन साइड ऑफ एंग्लो आयरिश ट्रेडिशन की. ठीक है जी. While Wilde wasn't a deep thinker and his attitude to life was essentially a playful one. मतलब मज़ाहिया. उनकी जो एटीट्यूड थी लाइफ की तरफ वाइल्ड की वो क्या थी? प्लेफुल वन, मतलब मज़ाहिया थी. वाइल्ड इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ प्योर एंटरटेनमेंट. ठीक है जी. ऑस्कर वाइल्ड जो था वो क्या था? कंसिडर किया जाता था कॉमेडी ऑफ फादर ऑफ द कॉमेडी ऑफ प्योर एंटरटेनमेंट की. वाइल शॉ is the father of comedy of ideas. George Bernard Shaw, the father of comedy of idea, was a genius. ठीक है जी. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या था? जीनियस था. He was the father of the comedy of idea and he was a genius person. Okay, so that's it for today, guys. Thank you so much for coming to my channel and listening to me. We'll see you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.